Hello everyone. In the field of semantics, the contribution of Geoffrey Leech can't be ignored. He categorized the meaning of words into 7 categories. In this lecture, we will discuss 7 types of meaning given by Geoffrey Leech. This will be an introductory lecture to 7 types of meaning. If you want me to explain the 7 types of meaning in detail, please do provide your valuable comment in comment section. Let's begin and learn 7 types of meaning briefly. So who was Geoffrey Leech? Geoffrey Leech, a prominent British linguist. So he belongs to Great Britain. He identified 7 types of meaning. So he identified that there are 7 distinct types of meaning in language. In his seminal work on semantics, when he was working on semantics, so he identified 7 types of meaning. These types help us understand the multifaceted nature of meaning in language. So we know that there isn't one type of meaning, but there are several types of meaning in language which function differently. So the first type Geoffrey Leech names, that is conceptual meaning or denotative or cognitive meaning. So conceptual meaning can be called denotative meaning, dictionary meaning, or cognitive meaning. Also we call them like conceptual meaning, that is in our mind. So first we will have 2 definition and then we will have example. Definition: this is the literal or dictionary meaning of word. So what is conceptual meaning, denotative meaning, or cognitive meaning? These are the literal meaning of words and we can find in dictionary. So अल्फाज के वो मीनिंग जब हम डिक्शनरी खोलते हैं और डिक्शनरी से हमें पता चलता है, सो उस मीनिंग को हम डेनेटेटिव, कॉग्निटिव और कंसेप्चुअल मीनिंग कहते हैं. It refers to the basic, essential component of meaning conveyed by a word. So the meaning which are conveyed by the word, basic meaning, और हम कह सकते कि these are fixed meaning. इनका काम सिचुएशन से या जो है ना कॉन्टेक्स्ट से नहीं है, बल्कि जो डिक्शनरी में होते हैं, जो लिटरल मीनिंग होते हैं, जिसको हम कहते हैं कि लुग़वी मीनिंग होते हैं, उसी को हम कहते हैं कि ये कंसेप्चुअल मीनिंग है. ठीक है. एक और डेफिनेशन: दिस इज द कोर लिटरल मीनिंग ऑफ अ वर्ड एज फाउंड इन डिक्शनरी. सो कंसेप्चुअल मीनिंग जो है ना वो क्या होते हैं? दे आर कोर मीनिंग, बेसिक मीनिंग और लिटरल मीनिंग ऑफ वर्ड एज फाउंड इन dictionaries. Fine. So it is the basic essential component of meaning and that is universally understood. So हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो और 6 types of meaning है, so वो based करती है conceptual meaning पर. अगर हमारे पास agreed, और हम कह सकते हैं कि conceptual meaning are agreed meaning, where all the linguists agreed the meaning of words. So अगर हमारे पास conceptual meaning ना होते, dictionary meaning ना होते, so there will be all the time people will be fighting on the meaning of words, or they'll be absolutely difficult to understand other people. क्योंकि आप एक मीनिंग लेते, कोई और मीनिंग लेता, कोई तीसरा और मीनिंग लेता, चौथा और मीनिंग लेता, सो कोई भी अग्री नहीं होता. सो एक तो हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते और ऑल द टाइम देयर वुड बी कॉन्फ्लिक्ट अमंग द पीपल. सो हमारे पास जो और टाइप्स ऑफ मीनिंग है वो तमाम मीनिंग बेस्ड करती है कंसेप्चुअल मीनिंग पर. सो दे आर डिक्शनरी मीनिंग. नाउ आई विल गिव यू सम एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, द वर्ड cat refers to a small domesticated mammal with fur, sharp claws and tendency to catch rodents. Now wherever you see, so you will get this meaning of word. आप जब भी कहते हैं कि cat, तो लोगों के जहन में
केट की मीनिंग यही आती है अगर कोई इंग्लिश समझता है. सो वेयर एवर इंग्लिश इज अंडरस्टूड एंड इट इज रिटन, सो if you check the meaning of a cat in dictionary, so you will find this kind of definition, that a small domesticated mammal with fur, sharp claws. इसके पंजे जो होते हैं वो sharp होते हैं. ठीक है, ये क्या कहते हैं, किस तरह लगता है, तो आपकी इस किस्म की डेफिनेशन डिक्शनरी में मिलेंगी. So another example is the word home. It connotates warm, comfort and family. So when we check the meaning of the word home in dictionary, so we can find that it means warmth, it means comfort, or it means family. So आपको समझ आया होगा कि conceptual meaning, denotative meaning और cognitive meaning की वो टाइप होती है जो literal meaning देते हैं, जिसकी मीनिंग फिक्स्ड होती है. वो कॉन्टेक्स्ट, सिचुएशन या स्पीकर के बोलने से उसकी मीनिंग चेंज नहीं होती. दे आर नॉट फ्लूइड, दे आर फिक्स्ड. फाइन, एंड वी कैन फाइंड सच काइंड ऑफ मीनिंग इन डिक्शनरी. द सेकेंड टाइप ऑफ मीनिंग इज कॉल्ड कनेटेटिव मीनिंग. नाउ डेफिनेशन. This refers to the additional, often emotional or cultural association that a word carries beyond its literal meaning. So, हर लफ्ज़ के एक literal meaning होता है. जब literal meaning के अलावा कोई और meaning word देता है, ठीक है, जिसका ताल्लुक जो है ना वो culture से होता है, cultural association से होता है, emotion से होता है, ठीक है, जो कि beyond literal meaning होता है, हम उसको कहते हैं कनेटेटिव मीनिंग. सो कनेटेटिव मीनिंग वो मीनिंग होते हैं जो डिक्शनरी मीनिंग नहीं होते, जो लिटरल मीनिंग नहीं होते. ठीक है, सो दिस encompasses the additional meaning that a word carries beyond its literal definition. So these meanings are often emotional, cultural or associative. सो हम एसोसिएट करते हैं मीनिंग एक लफ्ज़ के साथ. हमारी इमोशन भी उसमें होती है, कभी कभी कल्चर भी होती है. कल्चरली हम उसको वर्ड को डिफ़ाइन करते हैं, इमोशनली उसको डिफ़ाइन करते हैं, या हम एसोसिएट करते हैं मीनिंग उस वर्ड के साथ. सो फॉर एग्जाम्पल, द वर्ड स्नेक माइट कनोटेट डेंजर. हम देखते हैं कि अगर आप डिक्शनरी में देखते हैं तो डिक्शनरी में आपको स्नेक की मीनिंग जो है ना वो डेंजर नहीं मिलेंगी. लेकिन डेंजर मीनिंग हम अक्सर औकात ये कल्चरली कनोटेटिव मीनिंग है. हम कहते हैं कि ये तो सांप की तरह है, ये तो सांप है, तो बंदा तो सांप नहीं होता. लेकिन हम कह सकते कि ओके दैट बी वॉचफुल, ओके बी अलर्ट. ये बंदा जो है ना ये आपको नुकसान जिस तरह सांप आपको नुकसान पहुंचाता है, आपको डसता है, इसी तरह हम कहते हैं कि ये बंदा भी ये स्नेक है, ये भी स्नेक की तरह आपको काट सकता है. सो हम जो होते हैं हम एसोसिएट करते हैं द मीनिंग ऑफ डेंजर विद वर्ड विद स्नेक, जो कि डिक्शनरी में नहीं होता. और हम कहते हैं कि डिसाइटफुल, जो बंदा धोखा देता है ना उसको भी हम कहते हैं कि ये स्नेक, क्योंकि हम स्नेक को एसोसिएट करते हैं कि ये भी धोखा देता है. हाँ, आप उसको पालते भी हैं, अपने पास रखते भी हैं, तब भी ये आपको डसता है. और ईवल, और ये जो है ना ईवल भी है, बुराई भी है. ठीक है, स्नेक. सो ड्यू टू द कल्चरल स्टोरीज एंड स्टीरियोटाइप्स, इवन दो इट्स कंसेप्चुअल मीनिंग इज सिंपली अ टाइप ऑफ रेप्टाइल. अगर आप स्नेक देते हैं डिक्शनरी में, सो आपको मीनिंग मिलेंगी कि क्या इस अ टाइप ऑफ रेप्टाइल. लेकिन इस रेप्टाइल, स्नेक डिफरेंट मीनिंग हम एसोसिएट करते हैं कल्चर. आई डोंट नो कि किस कल्चर में जो है ना इसको आप एसोसिएट करते हैं डेंजर से, ईवल से, या जो है ना डिसीट से, और किसी कल्चर में ये एसोसिएट नहीं भी हो सकती. लेकिन जिस कल्चर में हम रहते हैं, अगर वो
पश्तून कल्चर है, अगर वो पंजाबी कल्चर है, अगर वो ओरल पाकिस्तानी कल्चर है, अगर वो इंडियन कल्चर है, सो हम यहाँ पर कहते हैं कि स्नेक की जो एसोसिएटिव मीनिंग है वो क्या होती है, वो डेंजर की होती है, ख़तरे की होती हैं, वो जो है ना ईवल की होती है, वो जो है ना धोखे की होती है, ठीक है। सो ये सारे कल्चरली एसोसिएटेड मीनिंग होती है. Another example would be that the word home connotates warmth, comfort, and family, right? So, beyond its literal meaning of place where one lives. पहले में आई थिंक हमने एक मिस्टेक की थी यहाँ पर. ये जो एग्जाम्पल मैंने दी थी कि द वर्ड होम कनोटेट्स वार्म, कंफर्ट एंड फैमिली, तो ये कनेटेटिव मीनिंग में आता है, डेनेटेटिव में नहीं आता. आप जब डिक्शनरी में देखते हैं कि होम, सो होम की जो लिटिल मीनिंग होंगी तो वो क्या होंगी, वो होंगी कि द प्लेस वेयर वन लिव्स. सो home, the place where one lives, that will be denotative meaning, literal meaning और dictionary meaning. और इसकी जो associative meaning होंगी तो वो क्या होंगी कि home, it provides us warmth, comfort and family. So जब भी आप home का लफ्ज़ सुनते हैं, so आप associate करते हैं कि यहाँ पर comfort होंगी, यहाँ पर family होंगी, यहाँ पर warmth होंगी. लेकिन इसकी literal meaning क्या होंगी कि where one lives. तो ये पहली स्लाइड पर हमने थोड़ी सी गलत एग्जाम्पल डाली है कि होम की जो लिटिल मीनिंग है वो है द प्लेस वेयर वन लिव्स, एंड होम, कंफर्ट एंड वार्म इसकी डेनेटेटिव मीनिंग होंगी, ठीक है. नाउ थर्ड टाइप ऑफ मीनिंग, दैट इज कॉल्ड सोशल मीनिंग. Definition: this type of meaning conveys information about the social context of language use. कि आप लैंग्वेज को किस तरह यूज, मीनिंग डिपेंड करता है द यूज ऑफ लैंग्वेज इन अ सोशल कॉन्टेक्स्ट, इंक्लूडिंग द सोशल स्टेटस, मतलब कि दो बंदों के सोशल स्टेटस क्या है, और रिलेशनशिप एंड सेटिंग, कि किस सेटिंग में आप लैंग्वेज यूज करते हैं, ठीक है. And what is the social status of the two people, and what is the context in which language is used. So this is called in social meaning. Social meaning वो meaning होती है कि आप language, use of language in different contexts and in different social status and relationship and setting, relationship between two people, setting भी context में आती है. So एक और definition, this type of meaning conveys information about the social context in which a word is used. किस social context में क्या लफ्ज़ use करते हैं, including the speaker's social status, relationship with the listener, and the formality of the situation. For example, the difference between hello and hi can indicate formality versus informality. So this one will be formal, one will be informal. So in a formal setting, we will use what? The word hello, and in formal, we will use the word hi. So in एक situation में हम hello बोलते हैं और एक situation में हम hi बोलते हैं, और एक बंदे को हम hello बोलते हैं और एक बंदे को हम hi बोलते हैं. It depends on the social status between you and the person you're speaking. And it depends on the context in which these words are uttered, right? And it also depends on the setting and depend on the relationship between the speaker and the listener. So यहाँ से meaning पर arise होती है, जिसको हम कहते हैं कि social meaning, because from social setting, because from social relationship, because of the social status. Another example can be that the difference between the good morning, formal, and hey, that is informal, reflect different social contexts. एक social context में हम कहते हैं कि good morning, और दूसरी social context में हम कहते हैं कि hey. So good morning can be also formal social context, and hey, that is informal one. ठीक है. सो यहाँ से हम कहते हैं कि वैसे जो है ना गुड मॉर्निंग की और है की जो है ना मीनिंग एक है, लेकिन एक वर्ड हम यूज़ करते हैं एक कॉन्टेक्स्ट में और दूसरा हम यूज़ करते हैं दूसरे कॉन्टेक्स्ट में. सो दीज मीनिंग्स आर कंटेक्सचुअल, फाइन, बिकॉज फ्रॉम द सोशल कॉन्टेक्स्ट एंड सेटिंग मीनिंग्स अराइज. Now, third
type of meaning or fourth. Okay, this was the first, that's second, this is third, and this is fourth. The fourth type of meaning is called affective meaning. So the word affective, it means that it relates us to the emotions and feeling. So the meanings which are carried out, right? Or the meaning which are digged out from where? From the affection, from feeling and emotion. We call them affective meaning. Not effective, not with E, but with A, affective meaning. Definition. Now, this relates to the speaker's feeling or attitude towards the content or the listener. सो स्पीकर जो है ना उसकी एटीट्यूड जो है ना वो कंटेंट जो टॉपिक है, जो बात है, उसका एटीट्यूड किस तरह है, हाउ ही और शी फील्स अबाउट द कंटेंट एंड हाउ ही और शी फील्स अबाउट द लिसनर. सो ये बिकॉज अफेक्शन का ताल्लुक जो है ना वो फीलिंग और इमोशन से है. तो जिस तरह आप फील करेंगे और आपकी इमोशंस होंगी तो मीनिंग भी आप वर्ड्स को उसी तरह देंगे. वही उसकी लिटिल मीनिंग तो होंगी, लेकिन लिटिल मीनिंग के अलावा अफेक्टिव मीनिंग भी होंगी. इसकी एक और डिफिनेशन है कि दिस रिलेट्स दैट द स्पीकर्स फीलिंग, एटीट्यूड और इमोशन टुवर्ड्स द कंटेंट और द लिसनर. It often reflects the speaker's subjective responses. एक कंटेंट की तरफ या एक बंदे की तरफ आपका जो एटीट्यूड है वो एक तरह होगा, मेरा दूसरी तरह होगा, तीसरे का तीसरी तरह होगा, चौथे का चौथी तरह होगा. So it depends, okay, on the subjectivity of the speaker, how he or she feels about the content or about the listener. For example, saying that I am thrilled versus I am happy. So I am thrilled and I'm happy. दोनों की मीनिंग एक तरह है, लेकिन when we say I am thrilled, so यहाँ पर आपकी जो इमोशंस और फीलिंग की इंटेंसिटी है वो हायर है कंपेयर टू I am happy. So अगर आप किसी चीज़ की तरफ देखते हैं या किसी बंदे की तरफ देखते हैं, कंटेंट आपके सामने आ जाते हैं और आप कहते हैं कि आई एम थ्रिल एंड देन यू से दैट आई एम हैप्पी. सो किस बॉक्स में जो है ना वो मतलब कि फीलिंग और इमोशंस ज़्यादा होंगी? आई एम थ्रिल वाले में ज़्यादा होंगी. सो जो चीज़ आपके लिए, मेरे लिए आई एम थ्रिल है, परहैप्स आपके लिए वो आई एम हैप्पी हो सकता है. और जो चीज़ जो है ना मेरे लिए आई एम हैप्पी है वो आपके लिए आई एम थ्रिल भी हो सकता है. ठीक है. सो ये डिपेंड करता है, ये सब्जेक्टिविटी है कि किस तरह स्पीकर जो है ना वो उसका एटीट्यूड जो है ना किसी कंटेंट की तरफ या किसी बंदे की तरफ वो किस तरह है. ठीक है. सो अनदर एग्जांपल कैन बी सेइंग दैट आई एम ecstatic, right? Instead of I am happy. So somebody will say that I'm ecstatic. Okay, ecstasy, और somebody will say that I'm happy. दोनों की मीनिंग, I'm ecstatic की मीनिंग भी I'm happy है, लेकिन I'm ecstatic में emotions, feelings ज़्यादा होंगी किसी content या listener की तरफ. ठीक है, compared to I'm happy. So shows a higher level of positive emotion. बोथ में positive emotion, लेकिन पहले वाले में ज़्यादा है compared to the second one. यहाँ पर लिखा भी मेरे ख्याल में saying I am ecstatic instead of I'm happy shows a higher level of positive emotions. So affective meaning वो meaning होती है जो कि आपकी emotions और feelings से आती है. जो जिस कंटेंट को आप देखते हैं या जिस बंदे को आप देखते हैं या जिस सिचुएशन को आप देखते हैं, सो सिचुएशन को देखकर आपकी इमोशंस और फीलिंग के मुताबिक मीनिंग उस तरह अराइज होती है. दिस इज कॉल्ड अफेक्टिव मीनिंग. नेक्स्ट टाइप, दिस इज द सिक्स्थ टाइप ऑफ सिक्स्थ नंबर, दिस कॉल्ड रिफ्लेक्टेड मीनिंग. डेफिनेशन. दिस occurs when one sense of a word affects the interpretation of another sense of the same word. Sometimes we have, you see that one word and it will have two or three senses, two or three different meanings. For example, हमारे पास एक word है वो है bank.
सो बैंक की एक मीनिंग जो है फाइनेंशियल बैंक है, और एक बैंक जो है ना वो रिवर बैंक है, ठीक है। और एक हम बैंक को एज अ वर्ब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह हेड जो है ना उसके कई सेंस, एक हेड का मतलब होता है पार्ट ऑफ द बॉडी, एक हेड का मतलब होता है टेबल टॉप, एक हेड का मतलब होता है किसी इदारे की जो है ना सरबराह। सो कभी कभी हमारे पास एक वर्ड के डिफरेंट मीनिंग होते हैं, तो किस तरह एक सेंस जो है ना वो दूसरे सेंस को अफेक्ट करता है। अफेक्ट द इंटरप्रिटेशन ऑफ अनदर सेंस ऑफ द सेम वर्ड। एक वर्ड के दो तीन मीनिंग होते हैं, चार मीनिंग्स भी हो सकती हैं। किस तरह एक सेंस, एक मीनिंग जो है ना वो दूसरे मीनिंग को अफेक्ट करती है। Now another definition, this occurs when one sense of a word influences the interpretation of another sense of the same word. It often involves words and multiple meaning. Words with multiple meaning. So for example, that the word rose can reflect both its primary meaning, a type of flower, and its secondary meaning, that is to rise. राइट एक एज अ वर्ब यूज होता है और एक एज अ नाउन। एक रोज है और एक राइस है। सो रोज, अगर आप रोज की पास फॉर्म इस्तेमाल करते, राइस की पास फॉर्म इस्तेमाल करते तो वो रोज हो जाता है। सो फिर दिन यू विल कंफ्यूज कि ये रोज जो है ना ये वर्ब की पास फॉर्म है या ये हम रेफर करते हैं एक फ्लावर को, राइट इसकी दो सेंसेस हो गई ना। सो हाउ द वर्ड इज परसीव इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। एक में एज अ वर्ब है, एक में एज अ नाउन है। लेकिन अगर आप एज अ वर्ब आप कहते हैं कि रोज, तो रोज तो राइस की सेकंड फॉर्म, पांच फॉर्म भी हो सकती है, रोज फ्लावर भी हो सकता है। अनदर एग्जाम्पल कैन बी द वर्ड बैचलर कैन रिफ्लेक्ट बोथ इट्स प्राइमरी मीनिंग एन अनमैरिड मैन, and the secondary meaning is degree title, which might influence how the word is perceived in different situation. एक बैचलर का मतलब होता है अनमैरिड पर्सन, और एक बैचलर का बंदा होता है डिग्री टाइटल है, एक लेवल है ग्रेजुएट की, तो आप डिग्री लेते हैं, कहते हैं आई एम बैचलर ऑफ दिस सब्जेक्ट। अगर आप ये नहीं कहते आई एम बैचलर, आप जस्ट से दे आई एम बैचलर, सो बैचलर कैन मीन यू आर अनमेरिड, और बैचलर कैन मीन कि आपने बीए किया हुआ है। सो एक सेंस जो है ना वो दूसरे सेंस को अफेक्ट कर, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड मीनिंग इन सेमांटिक्स। द लास्ट वन, दैट इज collocative meaning, right? So definition, this refer to the association a word acquires because of the word it frequently collocates with. आप डिक्शनरी में देखते हैं कि एक वर्ड जो है ना वो दूसरे वर्ड के साथ चल सकता है कि नहीं चल सकता। इसको हम कहते हैं कलोकेट। हमारे पास कलोकेटिव डिक्शनरीज भी होती है ना, कि एक वर्ड जो है ना वो फॉल्स फ्रेंड्स है कि नहीं। हम अक्सर औकात कहते हैं ना कि आई बिलीव ऑन गॉड, सो ये गलत है ना, आई बिलीव इन गॉड। सो बिलीव के साथ हम ऑन इस्तेमाल नहीं करते, हम इन इस्तेमाल करते हैं। सो ये कोलोकेटिव डिक्शनरी होती है, कोलोकेटिव वर्ड्स होते हैं। दिस रेफर टू द एसोसिएशन अ वर्ड एक्वायर्ड बिकॉज ऑफ द वर्ड्स इन इट्स फ्रीक्वेंटली अपीयर्स विद, किस वर्ड के साथ कौन सा वर्ड चल सकता है। दिस एसोसिएशन कैन सटनली अल्टर द मीनिंग ऑफ द वर्ड, मीनिंग जो है वो चेंज हो सकती है। एग्जाम्पल, देयर द वर्ड स्ट्रॉन्ग इन स्ट्रॉन्ग टी वर्सेस स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट। सो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग की मीनिंग एक है, आप जब टी के साथ इस्तेमाल करते हैं ना स्ट्रॉन्ग टी, और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग की मीनिंग वो चेंज हो जाती है। तो दिस इज कॉल्ड कोलोकेटिव मीनिंग, shows how its meaning change slightly based on the words in commonly pair with. अगर ये वर्ड स्ट्रॉन्ग आप टी के साथ यूज करते हैं सो इसकी मीनिंग और होती है। आप कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग टी जबरदस्त टेस्टी चाय है, और अगर आप कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट मीन कि आपके आर्गुमेंट में वजन है, आपने अच्छा आर्गुमेंट दिया है ना, सो मीनिंग चेंज हो जाती है कि आप इस स्ट्रॉन्ग को कौन से वर्ड के साथ यूज करें। इसको हम कहते हैं कोलोकेटिव meaning. So example another can be that the word heavy in heavy rain, यहाँ पर heavy rain का मतलब होता है कि ज़्यादा बारिश हुई है, right? versus heavy traffic, लेकिन यहाँ पर heavy traffic का मतलब होता है कि ट्रैफिक रोड पर बहुत ज़्यादा है।
हेवी रेन का मतलब जो है ना वो और है, तेज बारिश हुई है ना, तेज बारिश, हेवी रेन। हम कहते हैं ना कि हेवी रेन, तेज बारिश। और हेवी ट्रैफिक का मतलब होता है कि रोड पर ट्रैफिक ज्यादा है, बहुत ज़्यादा रश है। सो इट डिपेंड्स कि आप वर्ड को कौन से वर्ड के साथ यूज़ करते तो फिर उसकी मीनिंग भी चेंज हो जाती है। शोज हाउ इट्स मीनिंग चेंजेस स्लाइटली बेस्ड ऑन द वर्ड इट कॉमनली पेयर्स विद. Sorry, that was the sixth one. This is now the seventh one. Now, thematic meaning. Definition. It involves the way in which the order and emphasis of word in a sentence contribute to meaning. मतलब कि आप word जो है ना वो कौन से जगह पर place करते हैं जुमले में, उसकी order किस तरह है. और it focuses on how the arrangement of words affect interpretation. आप एक वर्ड होता है, आप उसको एक जगह पर लगाते तो उसकी मीनिंग और होती, आप उसको दूसरी जगह पर लगाते तो उसकी मीनिंग और हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल, द डिफरेंस बिटवीन जॉन डोनेटेड द बुक टू द लाइब्रेरी एंड द बुक वॉज डोनेटेड टू द लाइब्रेरी बाई जॉन नो हाईलाइट्स डिफरेंट थीमेटिक फोकसेस. एक में जॉन डोनेटेड द बुक टू द लाइब्रेरी, जॉन इज द सब्जेक्ट, ही इज डूइंग एन एक्शन. In the second one, the book was donated to the library by John. एक में फिर बुक जो है ना वो सब्जेक्ट हुआ, जॉन वो बैकग्राउंड पर चला गया. एक में जॉन, पहले जुमले में जॉन जो है ना वो foregrounded है, he is giving importance here. While in the second one, John goes to the back, वही जॉन है. आप उसको जुमले के स्टार्ट में इस्तेमाल करते हैं तो उसकी मीनिंग और हो जाती है, वो एक्शन करने वाला होता है. आप उसको बैकग्राउंड पर ले जाते हैं तो वही जॉन है लेकिन उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है, वो फॉरग्राउंड की जगह बैकग्राउंड पर चला जाता है. और हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल द डिफरेंस बिटवीन द कैट चेस अ माउस, द माउस एंड द माउस वाज चेस्ड बाय द कैट. एक में है कि द कैट चेस्ड द माउस, कैट को प्रायोरिटी दी गई है, कैट जो है ना वो एक्शन करने वाला है. दूसरे में द माउस वो जो है ना एक्टिव हो गया, was chased by the cat. कैट जो है ना वो बैकग्राउंड में चला गया. तो वही वर्ड होता है, आप उसको जुमले में इसके ऑर्डर चेंज करते हैं तो मीनिंग भी चेंज हो जाती है. इसको हम कहते हैं कि थीमेटिक मीनिंग. सो विद द फर्स्ट एम्फेसाइजिंग द कैट्स एक्शन and the second emphasize the mouse experience. You see? So how the word order changes the meaning of word in a sentence. So this was all about the 7 types of meaning I briefly discussed. And once again, I'm telling you people that if you want me to discuss each type in detail, so then we will have a separate lecture on each type of meaning in language. Thank you so much. Please do provide your valuable comment in comment section.